we can see here how to find the cube roots of the numbers. So here finding of cube roots, only one method is there. The first method, that is the prime factorization method, is there. We can find the cube roots with the help of the prime factorization method. So for example, we can see, take here that what is the cube root. Cube root, the symbol of that cube root, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या था, इस तरह से स्क्वायर रूट का सिंबल था. लेकिन क्यूब रूट्स का सिंबल्स क्या रहेगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट की तरह, और इसके अंदर जो है यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, उसे हम क्यूब रूट्स बोलकर डिनोट करते हैं. इस तरह से क्यूब रूट्स लिखे जाते हैं. इफ सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 343. व्हाट इज द क्यूब रूट्स ऑफ 343? Let we can see here that first with the help of prime factorization method we can find it out. 343 we can take here this number, it is divisible by 2, no 3 plus 4 is 7, 7 plus 3 is 10, so it is not possible with 3 also. 4 not possible, 5 not possible, 6, 7 it is divisible by, this number is divisible by 7. Let we can divide here that 7 4s are 28, 28 means 6 remains 63, 7 9s are 63, that is 40. 49 remains. Again 7 7s are 49 here, 7 1s are 7. So what is that 343 prime factorization of 343 is 7 into 7 into 7. So that what we got, तीन का यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाकर लेना पड़ेगा. You have to make the pair of 3 3s. So we can take here that 7 7s are 49, 49. So this all becomes we have to take as a 1. इन सबको 3 का एक पेयर बनाकर लोगे, so the 300, the square root of 343 is becomes, sorry, the cube root of 343 is becomes the 7. So इस तरह से आपको क्या करना है, cube roots find out करके लेना है. So sometimes the question is what, whether the question is 1188 a perfect cube? Is 1188 is a perfect cube? The question is what, whether the 1188 is a perfect cube or not. So let me can check with the help of the prime factorization method, that is 1188. We have to find out the prime factorization of this one. So even number it is, so we can divide this number with 2. Let me can check here, 2 5s are 10, 1 remains 18, 2 9s are 18 and 2 4s are 8. Again this number is even number, so again it is divisible by 2. So let we can divide, 2 2s are 4, 1 remains 19, 2 9s are 18, 1 remains 14, 2 7s are 14. But it is 297. 297 is not divisible by 2. So we can divide this number with 3. So 3 plus 9 is 11, 11 plus 7 is 18. 18 means it is possible to divide. 3 9s are 27, 2 remains, 3 9s are 27 again. Okay, then again 3 3s are, then 3 11s are. 11 1s are 11. So the prime factors of 1188. The prime factors of 1188 is 2 times 2, 1, 2 times 2, and how many times 3 is there? 3 times 3. 1, 2 and 3. But 1 time 11 is there. It means that the prime factors of 1188 are 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 11. But we have to make it the perfect cube. ये perfect cube नहीं है. So this number is not the perfect cube. How to make it the perfect cube numbers? How to make it the perfect cube numbers? तो यहाँ पर 3 का पेयर बनाना था. 3 का पेयर यहाँ पर बन गया है. ओके, सो यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बन रहा है. 3 का बनाना है. 3 का ग्रुप बनाना है. 3 का ग्रुप बन गया है 3 का, लेकिन 2 का 3 ग्रुप नहीं है 3 का. सो हम यहाँ पर 2 ऐड कर लेंगे. और यहाँ पर 11 का सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप है. सो 11 को हम क्या करेंगे, 2 और 11 यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 1188 is multiplied with 2 into 11 into 11. So then what the answer result we will get, that is the perfect cube we will get here. So in this way we have to find out the cubes of the cube roots of the numbers. In this way we have to find out the cube roots of the numbers, and also we have to check whether the number is perfect cube or not. We have to check in this way. Okay, we can see here that how to find out the cube root of a perfect cube number. If suppose the perfect cube number it is given and he says to find out the cube root of that numbers. अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये 85735 is there, that number is perfect cube number. If it is a perfect cube number, so how to find out the cubes of these numbers?
and also this 17,576, that is the perfect cube numbers. Then how to find out the cube roots of those numbers? This is very simple trick we have. With the help of that we can solve it easily. Let us see here that cube roots of that 8,57,375. सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको दो ग्रुप में आपको डिवाइड करके लेना है। और कैसे ग्रुप करने हैं, तीन तीन के एक एक ग्रुप बनाना है। 1 2 3 इज फर्स्ट ग्रुप एंड 1 2 3 इज द सेकंड ग्रुप हियर। It's 857 is the one group and 375 is the another group. So what we can do here that the firstly we can check 857 is between which two square cubes numbers. 857 is between which two cube numbers? 857 is between the 9th cube and the 10th cube. 857 is between the 9th cube and the 10th cubes. So what we can do here that हम जो biggest number तो नहीं ले सकते, so we can take here that it is the smaller than 857, the smaller cubic number it is 9. Smaller cubic number it is 9. So 9 का cubic क्या होता है? 729. Those 810 का cube क्या होता है? 10 का cube होता है 1000. The cube of the 10 becomes the 1000 and cube of the 9 becomes 729. So we can take here the 10 becomes which is bigger, so we cannot take the bigger number, so smaller number we can take, that is the 9 we have to take here. और इसका किसके बीच में रहेगा? 9 cubic के लगभग नियर रहेगा, then smaller I have taken, that is the 9th cube. And here 375 is the another perfect cubic number. That is here we can check it is that 5 sorry. The ending digit is 5. Ending digit किसका 5 हो सकता है? यूनिट डिजिट्स अगर 5 है तो उसका परफेक्ट क्यूब क्या आएगा? 5 का ही परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर सकते हैं? The cube roots of 8,57,375 is the 95. So इस तरह से आपको दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके यूनिट्स प्लेस कौन से डिजिट्स में आता है उस तरह से आपको ये फाइंड आउट करके लेना है। So next we can check one more example here, that is we have to divide, we have to make the groups of the first three and whatever the remaining number it is. यहाँ पर 5 digits है, तो firstly I will take here that 576 the first number and here it is the 17 is this another number. 17 is the another number. So what we can do here that firstly we can check here that is ये कौन से दो cubic numbers के बीच में है. So this is in between that 3 3s are 2 2s are 4 4 2's cube and it is between that 2 and 3's cube. This is between 2 and 3's cube, it is 8 is between 8, the cube of 2 becomes 8 and the cube of 3 becomes the 27. This is between in there. Okay, so we can take that smaller number, that is 2 we have to take here, that is 2 we have to take here. So यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था 6, अगर एंडिंग डिजिट्स अगर 6 है, एंडिंग डिजिट अगर 6 है तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स, कौन से परफेक्ट क्यूब नंबर्स में यहाँ पर आ सकता है? अगर परफेक्ट क्यूब नंबर्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कैसा है? 4 का अगर क्यूब देखेंगे, 4 का अगर क्यूब देखेंगे तो 64, 4 का एंडिंग डिजिट क्या आएगा? 4 ही, 4 4 are 16, 16 4 are 64. तो ये 6 एंडिंग डिजिट्स क्या हो रही है? 6 हो रही है। तो 6 का एंडिंग डिजिट्स क्या आता है? 6 6 are 36, 36 6 are 216. तो ये 6 का डिजिट्स को एंडिंग क्या आ रहा है? वहां पर 6 आ रहा है, तो ये किसका परफेक्ट क्यूब रहेगा? 6 का। सो द आंसर इज हियर, दैट इज 26 इज द आंसर। द क्यूब रूट ऑफ 17,576 इज द 26. तो इस तरह से आपको क्या करना है? पूरे जब परफेक्ट क्यूब नंबर दिया जाता है तो ये आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके।